नमस्ते बच्चों, दिस इज रोशन कुमार and as you know we together are doing exercise 1A from ratio analysis, right sir. As you can see, exercise 1A page 1.6. Please turn your page 1.6 and as you know, till problem number 11 we are already done with, right? Till yesterday we have done with problem number 11. So today onward we're going to cover problem 12. Okay, so let's start. Problem 12 says a is to b equal to 3 is to 4. What? A is to b equal to beta 3 is to 4. 3 is to 4. The value of 2a plus 3b, then you have to find out value of what you have to find, 2a plus 3b is to 3a plus 4b. Okay beta, be focused. This question is also very easy. So first what we can do is, as you know, a is to b, we can write it down as a divided by b equal to 3 divided by 4. And if it's a divided by b and 3 divided by 4, as we know, a equal to what will be there, 3 by 4 multiplied by b. Okay, and then if we want to write b equal to, then how we can write is b equal to 4a divided by 3, right? Hope no one has problem till here. No sir. What I have done is, see, a in the sense, if we want the value of a, then b has to go off from here and it's on division. So if it goes this side, this will become as a multiplications. Simply cross multiplication I have done. See, what I have done is cross multiplication beta. And for so many problem we have already done with cross multiplication. So basically what I have done, 4a equal to 3b. Now it's easy, right? So if we want value of a, this 4 has to go to this side. So see here, 3b divided by 4, right? And if we want value of b, then what will happen, 4a divided by 3, because this 3 will come this side. So multiplication will be as a division if it's going another side, right? So these two value we got. Now simply what we have to do is, we have to equate these values in these equations. Which equations, sir? These equations. Fine. So we are going to solve it now. Equating the value of क्या बेटा, a. Equating the value of a. Now see, 2, right? A equal to what is there, 3b by 4. So we can write 3b by 4. Is there any doubt? No sir. Plus 3b we already have. Okay, here 3, and we are equating the value of a. So a, what is there, 3b by 4. Okay sir. And here we have is 4b. Sir, why don't we put value of b? Beta, you can put either the value of a or value of b, so that the variable will be same. And if variables are same both the sides, then we will be able to simplify the solutions. That's why we have to keep any one variable so that we can simplify the solutions. Now keep doing the solutions. Now 2 and 3. So 3 2s are 6b divided by 4 plus 3b. Am I right? Right sir. Here 3 and 3. So 3 3s are 9b divided by 4 and plus 4b.
right. Now what we have to do is, here you have 6b by 4 and plus 3b, here also 9b by 4 and plus 4b. So what we have to do is, we have to do sum first, both the sides. How we will do? Simply we can take LCM of both. So here you have 4, here if nothing is there, it will be pretended that here it's 1. If here nothing is there, then it will be pretended that it's 1. So 4 into 1, 4, 4. Chalo. And then here 6b plus 1 4 ja 4 and 4 3 ja. 4 3 ja how much? 12b. Okay, 12b. This side also. LCM if we will take 4 and 1, how much it will be? 4. So 4 1 ja 4 and 9 multiplied by 1 equal to how much? 9b. I hope you understand this simple mathematics. If no, please comments, I'll give you the solutions how to do. Now 1 4 ja 4 and 4 multiplied by 4, how much it will be? 16b. Okay, right. Now both the side you can see, what is there? 4 and 4. So simply we can remove this 4, right? Right, sir, no doubt till here. And here you will have 12 and 6, how much? 18b is to 9 and 16. So 9 and 16, how much it will be? 16 4 b, so 25b. Now both the side are b and b, so what we can do? B we can remove it, b and b both the side we have removed. So ultimate ratio would be 18 is to 25. 18 is to 25. Let's see if you have any options. 18 25, yes sir. D we have, option D we have. Any doubt? No sir. तो बेटा मैंने क्या किया था, सिंपली आपको पूछ रहा है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि a is to b and a is to b इक्वल टू, यदि 3 is to 4 है तो वैल्यू पता लगा के दीजिए मुझे 2a प्लस 3b इज टू 3a प्लस 4b का। आप प्रॉब्लम उल्टा के देखो अपने टेक्स्ट बुक में, नहीं है तो मैंने बोला था कि डाउनलोड आप कर सकते हो, डाउनलोड करके देख लीजिए। ओके, तो सबसे पहले तो इसको हम इक्वेट कर लेंगे, a बाई बी इक्वल टू 3/4 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस, आप तो हीरो हो इसमें। सो 4a हाउ 4 and a, so 4a and 3 and b, so 3b. Now if we want value of a, then simply we have to क्या हमें करना होगा कि इस 4 को इस साइड लेके जाना होगा। सो 3b डिवाइड बाई 4, हेयर इट्स इन मल्टीप्लीकेशन तो उस साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। ऐसे ही इफ़ वी वांट वैल्यू ऑफ b, देन 4a डिवाइड बाई 3b हो जाएगा। ऐसे ही 3 को इस साइड लेके आना पड़ेगा तो 4a ऑलरेडी है एंड डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। सो एनी वन यू कैन डू so that you can use it in another equations, right sir. Now see here, now value of 2a and 3 through 2a plus 3b is to 3a plus 4b। यहाँ पे हमने किसी एक वेरिएबल को रखना है, या तो आप a को रखिए या फिर आप b को रखिए, तभी तो आप, मैंने बोला था कि यदि आपको इक्वेट करना है, यदि आपको सिंप्लीफाई करना है तो कोई एक वेरिएबल रहना चाहिए दोनों साइड में, ताकि आप इसे इक्वेट कर सको, राइट, सिंप्लीफाई कर सको। तो यहाँ पे 2 एंड a का वैल्यू रख दीजिए, तो a इक्वल टू 3b/4 है, तो मैंने कर दिया 3b/4। यहाँ पे भी a का वैल्यू रख दिया, सो 3 एंड 3b/4, राइट। नाउ इसको सिंप्लीफाई किया, 3 2 जा 6/4 एंड यहाँ पे 3b। यदि यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम मानते हैं कि एक है, ओके, एंड यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम मानते हैं एक है। अब जब ऐसे एक साइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर हो एंड दूसरे साइड सिर्फ एक ही रहता है न्यूमरेटर, तो इसको डिनोमिनेटर को हम क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, एंड फिर हम सिंपल फंडा अपनाते हैं जो हम 5-6 स्टैंडर्ड में देखे हैं। ऐसे हम अपना के क्या करते हैं, सम कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है सर। यहाँ पे थोड़ा बता दीजिए, यदि फॉर एग्जाम्पल ध्यान देके देखना,
a बाई बी प्लस सी बाई डी। यदि इसको हमको सम करना है तो कैसे करेंगे, पहले जो इसका डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर का हम जो है सो एलसीएम लेते हैं। मान लो यहाँ पे बी डी हो गया, बी डी हो गया। अब इस बी से इसको भाग देते हैं, जो हमें मल्टीप्लाई करके आया है उससे भाग देंगे तो बी कट जाएगा, बचेगा क्या, डी। और इससे जो भागफल आता है उससे हम इसको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी। अब इस d से हम इसको भाग देंगे तो d से d कट जाएगा, बचेगा क्या, b। एंड इस b से हम c को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cb। बस यही फंडा मैंने वहाँ पे अपनाया है। वहाँ पे bd है, यहाँ पे 4n1 है, तो 4 1 जा 4 हो गया, एंड देन बाकी का फंडा मैंने अपना दिया। ये करके यदि आप सिंप्लीफाई करके जाओगे तो आपका रेशियो हो जाएगा 18:, कितना बेटा, 25। आई होप नो वन हैज़ डाउट टिल हेयर। नो डाउट सर। ओके बेटा, चलिए अनदर प्रॉब्लम वी हैव इज प्रॉब्लम नंबर 13। चलिए हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 13। इसमें क्या है, 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 इफ 4 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच दे आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। द नंबर्स आर ओके बेटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। तो आपको पहले पूछा क्या है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपके पास बुक है, नहीं है तो डाउनलोड करना है। ठीक है, ICAI के वेबसाइट पे 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ, अच्छा तो 2 नंबर का रेशियो ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर है उसका रेशियो कितना दिया हुआ है, उसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3। अब कह रहा है कि 4 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच दे आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। सो इफ 4 सब्सट्रैक्टेड then ratio become कितना, 3:5। फाइन। तो हम पहले क्या करेंगे कि कौन सा वो नंबर है जिसका रेशियो 2:3 है, तो लेट x and y be the number which ratio is कितना बेटा, 2:3। सो x is to y इक्वल टू कितना, 2:3। कहने का मतलब यदि इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें बेटा तो x बाई वाई इक्वल टू 2/3। व्हाट इज x एंड y, सर यहाँ पे जो नंबर बोला है कि 2 नंबर, रेशियो ऑफ 2 नंबर, वही 2 नंबर हमने प्रिटेंड कर लिया है कि x एंड y है, जिसका रेशियो है 2/3। अब बोल रहा है कि इफ 4 बी सब्सट्रैक्टेड, रेशियो कितना हो जाएगा, 3:5। तो इस कंडीशंस में पहले हम क्या कर लेते हैं, इस कंडीशन में पहले हम वैल्यू ऑफ x एंड y फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए सर, तो यहाँ पे पहले हम वैल्यू ऑफ x एंड y कैसे करेंगे, आप तो हीरो हो इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। जी सर, तो ऐसे कंडीशन में 3x इक्वल टू कितना, 2y। सो x इक्वल टू, बताइए 3 को इस साइड लेके जाएंगे तो 2y डिवाइड बाई 3, और y इक्वल टू 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो कितना होगा, 3x डिवाइड बाई 2। फाइन, यहाँ तक किसी को डाउट, नो सर। अगला देख लीजिए। नाउ दूसरा जो टर्म है, इफ 4 सब्सट्रैक्टेड देन रेशियो बिकम्स 3:5। तो if now x minus 4 divided by y minus 4, then the ratio becomes how much beta, 3:5। then the ratio becomes 3:5। is there any problem, no sir। चलिए तो देख लीजिए, here again what we have to do is same funda we will do। what sir,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल टू 3 multiplied by y minus 4. Is there any doubt? No doubt, sir. Then what will be the equation finally? 5x minus 20 equal to 3y minus 12. Is there any doubt? No, sir. No, sir. No doubt at all. Right? Right. अब क्या करेंगे, यहां पे कर दो सर। नाउ पुट एनी, नाउ बोथ द साइड वी शैल हैव सेम वेरिएबल। सी नाउ दिस साइड इट्स y and this side it's x. So to bring both the side same variable, what we have to do, we have to equate, we have to put the value of any one variable. Let's say if you want to bring both the side y, then obviously x value we need to put. So now putting the value of x, we get कितना हो जाएगा बेटा 5, एंड ऑब्वियसली x का वैल्यू x इक्वल टू कितना है 2y by 3, 2y by 3, am I right? Right, sir. Minus rest of things are correct only, right? What you have to do is do multiplication. 5 2 जा 10y divide by 3 minus 20 equal to 3y minus कितना बेटा 12, right? Right, sir. y, so another page, 10y divide by 3 minus 20 equal to 3y minus बेटा 12, am I right? Right, sir. और जैसा कि मैंने सिखाया था कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, एक है, एंड देन इस दोनों का डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन। सो 3 यहाँ पे 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, एंड 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y माइनस 1 से 3 में, सो 3 1 3 जा 3, एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना होगा 60 इक्वल टू 3y माइनस 12। यस सर, ये क्या है डिवीज़न में है, इसको यदि मैं इस साइड लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो 10y माइनस 60 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3y माइनस 12। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अगेन 10y माइनस 60 इक्वल टू 3 3 जा 9y माइनस 12 तिया 36। इज दैट ऑल राइट? ऑल राइट सर। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 10y माइनस 60 इक्वल टू 9y माइनस 36 हमें आ गया, राइट? अब हम 10y, यदि 9y को हम इधर से इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है प्लस है, राइट? तो प्लस इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, एंड यहाँ पे माइनस 36, ये देखो माइनस 60 है, इसको यदि इस साइड लेके आएंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, एंड देन इट विल बिकम 60। एम आई राइट? राइट सर। सो y इक्वल टू हाउ मच? इट विल बी 36 एंड 4 40 50 60, so it will be 24. It will be how much? 24 sir. It will be 24, right? So you got value of y. Okay, okay sir. Now put the value of
put the value of y in देख लो यहाँ पे इक्वेशन कौन सा है, लेट्स से इसको हम इक्वेशन 1 एंड इसको हम इक्वेशन 2 करेंगे. सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. सो x इक्वल टू 2y डिवाइड बाई 3, राइट. क्या है आपका इन इक्वेशन 1. सो वहाँ पे था x इक्वल टू 3y डिवाइड बाई कितना था, x इक्वल टू 2y डिवाइड बाई 3, x इक्वल टू 2y डिवाइड बाई 3, x इक्वल टू 2y डिवाइड बाई 3. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय y इक्वल टू कितना आया था आपको 24. सो 24 डिवाइड बाय 3, राइट. राइट सर. नाउ further if you will simplify, what will be the 3 1 ja 3 and 3 8 ja 24. So finally you will have 2 multiplied by 8 means 16. So that number that is x and y is equal to x how much 16 is to y how much 24. Why? In the sense we have see here what we have told here ki let x and y be the number, x and y be the number, and finally we have found the value of x and y. So value of x and y is that number. Now let's see, is there any option? Is there any option? We are doing better which number? We are doing 13. So 16 and 24. Yes sir, yes sir. A itself is that option. Is there any doubt? No. देख लो आप एक बार, आपके पास 30 सेकेंड है, देख लीजिए. क्या किया मैंने, रेशियो आपको दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ 2 नंबर is 2:3. Okay sir. So we have mentioned that 2 number 2:3 and we have assumed that let's say that number is x and y. So x is to y equal to 2:3. Now they are saying if 4 is subtracted from each such number, the ratio becomes how much? The ratio becomes 3:5. So that is second option. See here, x minus 4 divided by y minus 4 is equal to 3/5. And then we have simplified it, right? We have simplified it, and then we have equated the value of y in equation 1, that is x equal to 2y divided by 3 में value of y we have put, and then we got the value of x. So finally we have found out the value of x and y as 16 and 24, and that is the number which they are talking about, right? Sir, it has become very lengthy, so what to do beta? Now you are finding it very lengthy, but once you learn it, once you will solve it twice or thrice, it will become very easy. Not even 1 minute it will take to solve you. Okay, so nothing to worry. Chaliye, now we are gonna solve another problems. Which number sir? Problem number 14, right? So let's start problem number 14. What you have is the angles of triangle are in the ratio of 2:7:11. The angle are, so the angle of किसका triangle, the angles of triangles are 2:7:1. The angle of triangles are 2:7:1. The angle are, now beta
And this is totally depends upon one concept. You remember concept number 2. Concept 2, where I told either you can multiply, or you can subtract, or you can क्या subtract with same number either of sides. कहने का मतलब कि यदि आप मान लो कि x नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जितने भी रेशियो है सब में आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यदि आप x नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो जितने भी है उसमें आप x से डिवाइड करोगे. कहने का मतलब इफ़ यू आर डूइंग 2 मल्टीप्लाइड बाई x देन यू हैव टू डू 7 मल्टीप्लाइड बाई x एंड देन यू हैव टू डू 11 मल्टीप्लाइड बाई x. ओके, इफ़ यू आर subtracting by x then you can do 2 by x is to 7 by x is to 11 by x. So whatever you are doing you have to do for all the ratios, right? So by keeping this particular concept in mind, now you have to verify what options. What are those options? The options given are, see, 20 degree, 70 degree and 90 degree. So if there is 20 degree is to 70 degree and how much 90 degree. This is option A. Now we will do one by one. So if 2 has to become 20, there has to be multiplication by 10, right? So यहाँ पे 2 multiplied by 10. Okay, now another ratio is 7, so 7 multiplied by 10. Okay, and another ratio is 11, so 11 multiplied by 10. Does it hold goods? सर ये तो हो गया 2 10 जा 20 करेक्ट, 7 10 जा 70 करेक्ट, बट 11 10 जा 110 होता है. यहाँ पे कितना दिया है 90, मीन्स दिस ऑप्शन डज नॉट होल्ड गुड. हमने जो कंसेप्ट नंबर 2 पढ़ा था उसको ये सेटिस्फाई नहीं करता है. ओके, नाउ बी नंबर का ऑप्शन देख लीजिए. बी नंबर का ऑप्शन आपको दिया है 30 70 एंड 80. 30 डिग्री 70 डिग्री एंड बेटा कितना 80 डिग्री. सेम फंडा हम करेंगे. सो इफ 2 हैज़ टू बिकम 30, व्हाट हैज़ टू बी देयर 2 मल्टीप्लाइड बाय 15, राइट? नाउ दिस इज कॉमन फॉर ऑल नाउ, एंड देन हेयर ऑल्सो 7 multiplied by 15 and here also beta 11 multiplied by 15. So 15 2 ja 30, that holds good, but 15 7 ja it won't be 70, means it's not holding goods, means this does not satisfy the concept. This does not satisfy the concept, means this option also does not holds good. Gone. C number we will see. C number what we have is 18 degree 63 degree and 99 degree. 18 degree 63 degree and beta 99 degree. Let's try here. Now if 2 has to become 18, then obviously what has to be there 2 multiplied by 9. 9 2 ja 18, right? Now this 9 has to be common for all. Yes sir. So 7 multiplied by 9 and finally 11 multiplied by 9. Let's say 9 2 ja 18 holds good, 9 7 ja 63 holds good, and 9 11 ja how much 99 means holds good, right? This has satisfied the condition. This has satisfied the conditions. That's why option C would be the answer. Have you understood? Have you understood? Okay sir. चलिए, now next question 14. 15 we will see. Question number 15 we will see. Okay, now division of rupees 324 between x and y in the ratios of 11 is to 7. X and y would get rupees. This is damn easy, right? Division of
division of how much? Division of rupees 324. Division of rupees 324 between x and y. x and y. And ratio क्या है? In the ratio of beta, in the ratio of 11:7. 11:7. So x and y would get rupees how much? Now see, this is damn easy. This money has to be divided between x and y. Same formula. Mummy had to divide the candy between Chunnu and Munnu, and that was in the ratio of 1:1. And here they are asking, here you have to divide in the ratio of 11 is to how much? 11:7, right? So what we have done, 11 plus 7 equal to first, how much it has come? 18. This is step 1 you have to do. Now while dividing x portion, how much it will be? 324 divided by 18. Simply what we have done is per ratio we have find out and then multiplied by 11th ratio. How much? X part is 11, so 11th ratio how much it will be? Here also 324 divided by beta 18 multiplied by what is the portion of y? 7, sir. So 7th how much it will be? Is there any doubt till here? Beta, what you have to do is you just have to go and see mummy ka example, right? Yes sir, मम्मी का एग्जाम्पल हमें देखना पड़ेगा. ओके, now see here, without calci we have to do, so you have to simplify here. 324 divided by 18 multiplied by 11, 324 divided by 18 multiplied by 7. Now you just simplify it. कैसे? I'll show you. Calci you cannot use, so what you have to do, 2 नमा 18, 2 एकान 2, 2 छक्के 12, 2 दूना 4. That's all. Now 3 3 जा 9 and 3 5 15, 3 चौका 12. So 3 3 जा 9, 3 5 15, 3 का 3 6 3 9, 3 चौका 12. Okay, and 3 1 जा 3 1 जा 3, 3 8 24. So here you will have 18 multiplied by 11. 11 8 88 के 8, हाथ में 8, 11 कान 11, 13 14 15 16 17 18 19, 198. Here also 8, right? So finally 18 multiplied by 7, 126, right? So what you have is 198 and 126. Am I right? Right sir. How much you have? 198 and beta 126. So is there any option like that? Is there any option? 198 no, you don't have any option. So division will be, so x is to y equal to 198 is to 126. However this option is not available, so D means none of above, right? Right sir. Now we will do 16th. Question number 16th. Anand earns rupees 80 in 7 hours and Pramod rupees 90 in 12 hours. The ratio of their earnings is, okay,
Okay, so what you have to do is Anand earn rupees 80 in 7 hours. Rupees 80 in 7 hours. And Pramod earns how much? Rupees 90 in Pramod earns rupees 19 in 12 hours. Pramod earns rupees 90 in 12 hours. Okay beta? Okay sir. So what you have to do is you have to find out ratios. So what are the ratio between them? Right? So first thing what I told, if you are remembering, if at all you have to calculate the ratios, there has to be a common base. There has to be क्या? Common base. Right? I have done one illustrations like that. Common base. So here you see hours is there, that is for sure, but he is earning rupees 80 in 7 hours and this fellow is earning rupees 90 in 12 hours. So either you have to bring this rupees in equations, like you have to equal these rupees or you have to equal these hours. So what you will do? So what we will do is we will find out how much both of them are earning in 1 hour. Okay, so for Anand 7 hours, how much is the earning? 80. So 1 hours, what will be the earning, sir? 80 divided by 7. 80 divided by 7. Right, sir. Another Pramod 12 hours, how much Pramod is earning? Rupees 90. So 1 hour, how much Pramod will earn? Rupees 90 divided by 12. Right. Now both of them are brought down to 1 hour. Now we can put the ratio for 1 hour now, because both has now common base. So ratio would be ratio AP equal to 80 divided by 7 is to 90 divided by 12. 90 divided by कितना बेटा? 12. Am I right? Right, sir. Okay. And as you know, we always can do क्या? Cross multiplications, and this after doing all the solutions, we will find the ratio would be 32. Further simplify you can do, multiplied by 12. 90 multiplied by how much? 7. 90 multiplied by beta 7. Okay, so let's simplify it. How you will do, sir? Both the side are 0, so first of all reduce this 0. Okay, now 3 3 ja 9, 3 4 ja 12. Am I right? Right, sir. So it will become 8 4 ja 32 and 7 3 ja 21. 32 is to 21. 32 is to 21. Let's see if there are any options like that. 32 21. Yes sir, there is option 1. There is option A only. Okay, fine. So we have done till 16th. What we will do, next video I will make where we will solve 16 onward. Till that, what you have to do is you just have to revise concept, then revise
problem from 1 to beta 1 to 16. You have to revise, and then we will come in next class. We will be well prepared and come in next class for rest of the problems. Right. Till that time, bye bye.